A very lovely good morning, dear children. So, children, in the previous lecture, I was telling you about the Nazism, in which I told you how the Nazism developed. I also discussed about the Treaty of Versailles, which was signed between the Allied and the Axis power, in which there was a great loss for the Germany. And side by side, I told you the birth of the Weimar Republic. And after the birth of Weimar Republic, the effects of the war, the conditions which prevailed in Germany after the First World War, the economic crisis also I discussed with you. Let me show you the economic crisis, that is the year of depression. Okay, how the USA was helping after that in 1921 when the Wall Street Exchange crashed. The USA stopped giving loan to this small loans to Germany, due to which there was a great years of depression. And after that economic crisis, there was political crisis also in Germany, and side by side social crisis of also prevailed in Germany. So these all things create a fruitful background for a dictatorship to develop in Germany. And due to these things prevailing in Germany, that is the political, social, economic crisis, it was a background which helped Hitler to rise to power. Now, in this second topic, I'm going to discuss about Hitler's rise to power. So, children, again I'm telling you that crisis, economic, political conditions and the society which was formed over Germany, it formed a prevailing condition for Hitler to rise in power. So first of all, I would like to tell you who was Hitler. Hitler, he was born in 1889 in Austria. Already I have discussed in online session about Hitler. But once again, I would like to refresh you with all these topics. So he was born in Austria, and first he was acting as a messenger in the army after the First World War, and side by side he also won various medals for bravery also. So whatever the things went after the Treaty of Versailles was signed, Hitler was very serious about it. He was very infuriated about it. Okay, so he got tensed, and what he did, in order to help his country to move out from such kind of situation, he joined a small group which was called as the German Workers' Party, and after that he renamed it as a Nationalist Socialist German Workers' Party, which came to be known as a Nazi Party after that. In this way, a small party which was created by Hitler, that is German Workers' Party, it became a big organization called as a National Socialist German Workers' Party, and which was also called as the Nazi Party after that. Okay, in the beginning what happened, the Nazi, they were not able to mobilize the people till 1930. It was after the Great Depression period, when the economic crisis took place in Germany, when banks were collapsed and workers, when they lost their job. Now people starting, they having hope in Nazis only. They thought that Nazis are the only people, those who are going to help us to come out from such kind of situation. So due to this, by 1932, this party won 37% votes, and Hitler became, he was a powerful speaker, a great orator, and his passion and the words, the way he was speaking, the words, it really moved the people. And he promised that he is going to give employment for the people, those who are looking for the work. He is going to make future secure for the youth of the country, and side by side the lost dignity of the Germans will be again restored to them after the Treaty of Versailles. The dignity which was lost by these German peoples in the eyes of the other countries will be regained by Hitler. So these were the promises which were made by the Hitler. So Hitler, he started a new style of politics. A new style of politics. What kind of style of politics it was? He understood the meaning of rituals in Germany, the mass mobilization, and side by side he also took out the rallies which were totally in a different style. It was in a very ethical way, in a very ritualistic way, and side by side he also conducted a public meeting to instill unity among the people of the country, to unite the people of the country. And for the rituals, what they did, they took a red banners. You can see over here, the red banners is over here. I would like to show you once again.
Okay, this is the red banner. You can see this is a flag of the Nazis, which is having a swastika on it, a black color swastika on it. ठीक है, and this was created to unite the people and to support the Nazi party. And after this, Hitler was seen as a messiah or a savior of the Germans, who was trying to help them out in the difficult situations. Okay, so now I'm going to deal with the next topic. This is what, and side by side, one thing I would tell you, they were having the red banners, swastika also, the Nazi salute also. These are the rituals, the Nazi salute, the way they were saluting, the ritualized rounds of applause also, and the speeches. They were all the part of the spectacle of power which Hitler wanted to show to the people. Now I'm going to deal with the next topic, that is 2.2, that is the destruction of democracy. Now what happened? In 1933, President Hindenburg was the president of Germany at that time. What he did, he offered chancellorship to all the cabinets of the ministers to Hitler. Hindenburg was like a president, like we are having the president, and chancellorship. Now the question is, what do you mean by chancellorship? Chancellorship is the prime minister of our country. So president was the head of the state, and chancellorship was the head of the government in Germany at that time, like the prime minister of our country. So Hitler became the chancellor of the country, and side by side all the cabinet ministers were under Hitler. Now after getting the power, he became the head of the government, so he got all the power. Hitler, what he did, he first of all he broke the democratic structure of the government. उसने सबसे पहले किस पे प्रहार किया? डेमोक्रेटिक स्ट्रक्चर पे, डेमोक्रेसी को तोड़ना चाहा. इसके लिए उसने क्या किया? सबसे पहले द फायर डिक्री वॉज पास्ड ऑन 28 Feb 1933. Now fire decree, first of all I would like to explain you what is my fire decree. You have seen that democratic structure को तोड़ने के लिए अब क्या हुआ, वहाँ पे रिच टैग क्या है? वहाँ का पार्लियामेंट हाउस. पार्लियामेंट क्या, जैसे अपने यहाँ सांसद होती है वैसे ही वहाँ पे पार्लियामेंट होती है, जिसको रिच टैग बोलते हैं. तो वहाँ पे एक मिस्टीरियस आग लग गई थी. ठीक है, पता नहीं किसने आग लगाई, क्या लगी. तो जर्मन पार्लियामेंट बिल्डिंग में इसमें आग लग गई थी इन फरवरी में. ठीक है, इससे क्या हुआ कि इससे जो एक नया स्टेप लिया, और नया स्टेप क्या लिया हिटलर ने? द फर्स्ट लॉ, डिक्री मीन्स लॉ, द फर्स्ट लॉ वॉज पास्ड ऑन 28 February 1933. ठीक है, एंड इसने इसमें क्या किया, जितने भी सिविक राइट्स थे, सिविल राइट्स क्या थे हमारा, फ्रीडम ऑफ स्पीच, प्रेस, असेंबली, ये सब इन्होंने जो ऑलरेडी वेमर कॉन्स्टिट्यूशन ने हमको जर्मनी को दे रखा था, वेमर कॉन्स्टिट्यूशन ने, दैट इज सिविक्स राइट्स थे, फ्रीडम ऑफ स्पीच, प्रेस एंड असेंबली, वो सब उसने वापस ले लिया इन द फायर डिक्री ऑफ 28 February. ये याद रखना फायर डिक्री में क्या हुआ था. ठीक है, उसके बाद क्या किया उसने, वेरियस कम्युनिस्ट जो है इसने क्या किया, कंसंट्रेशन कैंप स्टार्ट कर दिए. ठीक है ना. अब उस जो उनके ऑपोजिशन पार्टी थे, कम्युनिस्ट थे, उन्होंने इस फायर डिक्री जो लॉ पास किया था हिटलर ने, उसके अगेंस्ट उन्होंने अपनी वॉइस उठाना शुरू किया. तो उसने क्या किया कि कंसंट्रेशन कैंप फॉर्म किए. कंसंट्रेशन कैंप में क्या करता था वो, कंसंट्रेशन कैंप में इन कम्युनिस्ट को पकड़कर और वहाँ पे भेज देता था. ठीक है, अब वहाँ पे जो रिप्रेशन था कम्युनिस्ट का वो बहुत सिवियर था. ठीक है, 6808 जो हैं यहाँ पे फाइल्स किए थे केस, और स्मॉल सिटी जो कि 500,000 ऑफ पॉपुलेशन थी, 1440 जो है वो कम्युनिस्ट के ही थे. इनको सबको उसने वहाँ पे कंसंट्रेशन कैंप में डाल दिया. सो 3 March 1933 को अब उसने क्या किया, ठीक है ना. अब इस कंसंट्रेशन में कैंप में वो क्या करता था, कंसंट्रेशन कैंप में इन सबको जाके वहाँ पे डाल देता था और मास किलिंग कर देता था. ठीक है, सो अब 3 March 1933 को इनेबलिंग एक्ट पास किया. देखिए, जब ये आपसे पूछा जा सकता है कि इसने डेमोक्रेसी को डिस्ट्रक्ट करने के लिए क्या क्या काम किए हिटलर ने. व्हाट वर द वेरियस स्टेप्स टेकन बाय द हिटलर टू डिस्ट्रक्ट द डेमोक्रेसी. नंबर 1 फायर डिक्री. ठीक है, नंबर 2 उसने कम्युनिस्ट कैंप, कंसंट्रेशन कैंप बनाए. नंबर 3 उसने इनेबलिंग एक्ट पास किया. अब इनेबलिंग एक्ट में क्या होता है, डिक्टेटरशिप डिक्लेयर कर दी जर्मनी के अंदर, डेमोक्रेसी ख़त्म कर दी, डिक्टेटरशिप आ गई. डिक्टेटरशिप मीन्स 1 man रूल. ठीक है, इससे क्या हुआ, डिक्टेटरशिप आने से सारी पावर्स
हिटलर के हाथ में आ गई एंड ऑल पॉलिटिकल पार्टीज एक्सेप्ट नाजी पार्टी वेर बैन। जितनी भी पार्टी थी जर्मनी के अंदर सबको उसने बैन कर दिया, सिर्फ नाजी पार्टी वहाँ पे काम कर रही थी। नाजी पार्टी मीन्स अपनी ओन पार्टी थी जो ये कर रही थी। उसके बाद नेक्स्ट उसने स्टेप क्या लिया, ही क्रिएटेड देयर ओन सिक्योरिटी फोर्सेस। उसने अपनी ओन सिक्योरिटी फोर्स बना ली, ठीक है, सोसाइटी को कंट्रोल करने के लिए। जिस वे में नाजीज जिस वे में चाहते थे सोसाइटी को कंट्रोल करने के लिए, उसके लिए उसने स्पेशल सर्वेलेंस, सर्वेलेंस मीन्स चेक करने के लिए स्पेशल सर्वेलेंस एंड सिक्योरिटी फोर्सेस उसने बना दी वहाँ पे। एंड ऑलरेडी जो वहाँ पे ग्रीन यूनिफॉर्म वाली पुलिस थी उसके साथ साथ उसने ऐसे और स्टॉर्म ट्रूपर्स, गेस्टापो मीन्स सीक्रेट स्टेट पुलिस फॉर्म कर दी, एसएस मीन्स प्रोटेक्शन इन स्क्वाड्स फॉर्म कर दिया, सिक्योरिटी सिस्टम ले आया एंड रेगुलर इनके साथ साथ जो ग्रीन यूनिफॉर्म पुलिस जो ऑलरेडी पहले चल रही थी उनके साथ साथ ये चीज़ें और ले आया। क्या लेके आया, ऐसे मीन्स स्टॉर्म ट्रूपर्स, गेस्टापो मीन्स सीक्रेट स्टेट पुलिस, एसएस मीन्स प्रोटेक्शन स्क्वाड्स एंड सिक्योरिटी सिस्टम। ऐसे ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ जो है सिक्योरिटी फोर्सेस उसने वहाँ पे लेके आ गया था, ठीक है। और पीपल जो है इनको कोई भी जो गलत इसके गवर्नमेंट के अगेंस्ट बोलता था उसको गेस्टापो के थ्रू डिटेन किया जाता था, उसको चैम्बर्स में कंसंट्रेशन कैंप्स में ले जाकर टॉर्चर किया जाता था, ठीक है। और उनको जो है अपने मन से इन लोग उठा लेते थे और अरेस्ट करके और बिना किसी लीगल प्रोसीजर्स के, बिना किसी ट्रायल के उन लोग जाके कंसंट्रेशन कैंप में डाल देते थे। सो पुलिस फोर्सेस जो है उनके पास पूरी पावर थी अपने ओन विल पर रूल करने की। ये थी आपका क्या, व्हाट स्टेप्स वर टेकन बाय हिटलर टू डिस्ट्रॉय डेमोक्रेसी इन जर्मनी। दिस इज एन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ओवर हियर, सो चिल्ड्रन learn it. Okay, now in this topic, now in the next topic, so okay, once again I'm writing you important steps taken, इस टॉपिक में आपको ये मार्क करना है, टेकन बाय हिटलर टू डिस्ट्रॉय डेमोक्रेसी, ठीक है। सो दिस इज एन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, तो आप इसको बेटा पढ़ना और इसको लिख भी लेना।